Hello friends, welcome to our new video. If you guys are new to our channel or if you did not subscribe our channel yet, then please go and subscribe our channel and hit the bell icon as well so that you can get the notifications of our new videos. Okay, so let's see the today's problem. So the today's problem is condition check. Okay, let's try to solve this problem. Here we have given a problem statement. The problem statement is two arrays of size n are given a and b. Okay. Determine whether the sum of ai into bi for all I such that I is uh, greater than equals to 1 and I is less than equals to n. Okay. So in input in first line we have given an integer n, and in the uh, second line contains n integers, that is a1 a2 up to an, and the third line contains n integers, that is b1 b2 and up to bn. Okay, and so in this problem we have to check if the inner product of a and b is 0, then we have to print yes, otherwise we have to print no. Okay, so in this problem what we can do, we have given a, a size of arrays a and b, that is इस प्रॉब्लम में हमको दो एरेज दिए हैं और एक एरेज की साइज दी है, एन साइज दी है. ओके, सो हमको इस क्वेश्चन में सम फाइंड करना है ए आई इंटू बी आई, सम ऑफ ए आई इंटू बी आई फाइंड करना है. ओके, फॉर ऑल आई such that this condition. Okay, so here you can see that here we have given some sample input and output. Okay, okay, so here in first input you can see that this is n and this is the two arrays, that is a and b. Okay, so for this sample input the output should be yes. Okay, so in this problem uh, if the inner product of a and b is 0, then we have to print yes, otherwise we have to print no. Okay, so how we can find this inner products of a and b? So let's see. So this is ai, so suppose this is a1 and this is a2, and same this is b array, so this is b1 and this is b2. Okay, so in question we have to find the sum of ai into bi. ओके, सो इस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है, सम फाइंड करनी है, दैट इज ए आई इंटू बी आई. दैट मीन्स हमको इसको ये जो एरे ए के एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करना है बी
एरे बी के एलिमेंट्स के साथ। लाइक सपोज ये A1 है, तो A1 को मल्टीप्लाई करना है B1 के साथ, A2 को मल्टीप्लाई करना है B2 के साथ। ओके ओके, सेम below here you can see that इसको हम चेक करेंगे इसके साथ, ये A1 को B1 के साथ, B2 को सॉरी A2 को B2 के साथ। ओके, एंड सेम for the, let's see the third. Okay, so here you can see that here the three elements are given in array, so A1 को चेक करेंगे B1 के साथ, देन A2 को चेक करेंगे B2 के साथ, और A3 को चेक करेंगे B3 के साथ। ओके, सो इस in this way we have to do the multiplication. Okay okay, so now here you can see that the inner product of A and B, अभी यहाँ पे -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं -3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, देन 6 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो 4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा 12। सो 12 को प्लस और 6 इंटू 2 12। ओके, सो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 12 माइनस किया तो 0 आउटपुट आएगा हमारा। ओके, यू कैन सी हियर। ओके, फॉर सेम फॉर दिस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो 4 इंटू -1 आएगा -4, और उसको ऐड करेंगे 5, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। ओके, सो इसका आउटपुट आएगा -15। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी एडिशन होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसका भी साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, सो 15 + 4 आउटपुट आएगा 19। ओके, so like this we have to find the inner products of the two arrays. Okay, and in here you can see that the output is 19, and the sign for the greatest number, that is -15 is okay, so -4. Okay, -4. Okay, sign of the greater number, जो भी ग्रेटर नंबर है उसका साइन इसको दे देते हैं। ओके, सो इन दिस सैंपल इनपुट एज वेल, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 3, देन प्लस 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 और 3 को, तो इसका रिजल्ट आएगा -18। ओके, देन इसको ऐड करेंगे 5 और 3 15। ओके, सो इसको इसको इसका रिजल्ट क्या आएगा, 15 + 3 18। ओके, 18 प्लस -18।
ओके, सो इसका साइन प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, सो 18 में से 18 माइनस किया तो आउटपुट 0 आएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट 0। तो अगर इस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है, अगर आउटपुट हमारा 0 आता है तो हमको यस प्रिंट करना है। ओके, और अगर आउटपुट 0 नहीं आता है तो सिंपली नो प्रिंट करना है हमको। ओके, सो this is the logic for this problem. Okay, now let's try to write the code for this problem. Okay, so let's code this problem. Okay, so first हम यूजर से इनपुट लेंगे। ओके, सो उसके लिए हम एक स्कैनर क्लास लेंगे। ओके, सो स्कैनर sc equals to new scanner system dot in. ओके, देन एक इंटीजर n हम नंबर इनपुट लेंगे। सो इंटीजर n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, एक नंबर इनपुट लिया। अभी नेक्स्ट दो एरेज हमको इनपुट लेना है। दैट इज दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड एरे। ओके, दिस इज a array and this is b array which is given in our problem statement. Okay, so here now we'll take the two arrays. So for that we'll write long and give the name for this array. Let's suppose a, then new long, and given the length for the array. Okay, same, we'll create another array, that is b, new long, length of the array. Okay, now we have to take the uh, array elements. Okay, uh, so we'll write the for loop for this. Okay, so we'll write integer I equals to 0, then I is less than n, I plus plus. Okay, after that inside this we'll write array of I equals to sc dot next int. ओके, सो फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स हमने यूजर से इनपुट ले लिए। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेकंड एरे के एलिमेंट्स भी हमको यूजर से इनपुट लेना है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। लेट्स सपोज लॉन्ग, एंड उसको नाम देते हैं रिजल्ट, और उसको असाइन कर देंगे 0 के साथ। ओके, लॉन्ग रिजल्ट इक्वल्स टू 0, then we'll take another for loop. ओके, सेकंड एरे के एलिमेंट्स यूजर से इनपुट लेने के लिए एक और फॉर लूप लिखेंगे यहाँ पे। सो एंड इनसाइड दिस फॉर लूप विल राइट b of I equals to sc dot next int. ओके, सो इस फॉर लूप में हमने सेकंड जो एरे है उसके भी numbers input ले लिए। ओके, सो नाउ what we can do, we have to multiply this
array element, that is AI into BI. Okay, so for that we have to take now we have to write one for loop, and then we'll multiply the uh, AI into BI inside this for loop. Okay, uh, or instead of taking another for loop, let's write the same code inside this for loop, and let's see whether it works. I think it should work, so let's write here. Okay, so what we can do, we'll write result, and we have to store this multiplication into one variable, this multiplication. Okay, so for that we have created one variable, that is result. So in here what we can do, we have to add this multiplication result into this variable. So simply we'll write result plus equals to array of I into B of I. Okay, so इस स्टेटमेंट से दोनों एरे के जो एलिमेंट्स हैं उसका मल्टीप्लिकेशन होगा और वो इस रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, लेट्स okay, now we have to write here, we have to write one condition, that is if this result becomes 0, then we have to print yes. Okay, if the result is 0, then we have to print yes, otherwise no. Okay, so for that what we can do, we can use the if else statement, or instead of if else, simply we can use the conditional statement. Okay, okay, so for that what we can do, mm, okay, so for that we'll directly write this conditional statement in uh, print statement. Okay, so we this directly we'll write system dot out dot, instead of writing the too much code for like first पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसमें वो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर प्रिंट कर देंगे वो जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट है वो हम इस प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देंगे. ओके, सो directly we have write system.out.println, then we'll check, we'll write the conditional statement here, that is if result equals to 0, then simply we have to print yes. Okay, or simply we have to print no. Okay, so we have written this conditional statement directly inside this print statement. So let's see whether it works or not. Okay, okay, so we have written the code. Now let's try to run this code. So what we can do, I'll copy this input and let's paste it here in input. Okay, and let's try to run this code. So click on run and let's see whether it works or not. Okay, some error
system.out. Okay, I think we made some spelling mistake here. System.out.println. Okay. Result equals to 0. Yes. No. Okay. Now let's see whether it works or not. Okay. So output is showing. Let's see. Okay. You can see that output is yes. Okay. And required output is also yes. Let's try second test case. So I'll copy this and let's paste it here. Okay, let's try to run. The output should be no. Let's see. Okay, you can see that output is no. Now let's run this third test case. Copy. Let's paste it here and let's click on run. Output is yes. Let's see. Okay, you can see that output is yes. Okay, so our all the test cases are running correctly. So let's try to submit this code and let's see whether all the test cases will pass or not. Okay, so click on submit. Okay, now our test cases are running. Let's see whether all the test cases are pass or not. Okay, you can see that means our logic for this problem is correct. Okay, see all the test cases passed. Okay, so that's it in this video. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।